Result discussion. See, this is not the correct way of writing. Result tables and discussion. No, this is called result and discussion. Okay, Anushka? Yes, ma'am. Yes. Yeah. This is the table. Okay, fine. अभी तो see interpretation is missing. इसका table का interpretation is not there. You are just writing mean, ST and item total. नहीं, the thing that follows is all this table ka interpretation only. अच्छा, here it is a in Yeah, interpretation. yeah. It is all because Okay, the one by table, one. the हाँ, table I've named 5.1. So these interpretations 5.1.1, 1.2, these are all coming under that interpretation. okay, fine. अच्छा, here you have grand mean. Yeah, okay, fine. हाँ, see, where is Debanjana? Debanjana, this you have to show this table. This is the correct table. And Anushka, I in have added this table. हाँ, but you have added R Studio का भी also. R Studio का also you have added, which is not correct. No, ma'am. हाँ, yeah, I can show you. I have Wait, not. It is the art. I'll Yeah. show you. I'll show you in your report. That is there. So, Anushka, you have to write here principal component, okay? Okay, okay, Not ma'am. representing factor loadings, okay? Now this thing, okay. Anushka, why this table is not up to the mark? This intercorrelation table, it's not coming in one page. Ma'am, because one page, how will it come, ma'am? It's a long table because if I am trying to bring it in one page, then the mean and everything, it will just squish because that is Excel and we can have a long table there. But यहाँ पे तो वो there's a I space. think Para has given to you, no? The Yeah, in the Yes, interpretation Excel sir. matrix. only. So In the basically, Excel only. Yeah. okay, I'll try to adjust this one. I'll try to adjust. No issues. Because then there is no point of showing the table ना if it is coming like this. Because ये see one का ये पूरा ऐसे एक टेबल में आता है, right? ऐसे करके. हाँ, और I'll हाँ see if I can do this. But हाँ क्या होता है word में वो space crunch होता है ना, that's why हाँ it's a bit difficult. okay But I'll try. हाँ you please try to make this look good. Otherwise कोई उस टेबल को फिर read नहीं करेगा. Then okay, principal component analysis is here. Summary, no, summary, it is called conclusion. Suggestion, ये सब बहुत conclusion is here. Okay, fine. Because Summary is here. summary means I have summed all the three tables that I have discussed, and conclusion is I've like given a precise conclusion. Sir, is it okay? Because they are writing here summary, then Summary, suggestion, I think then is conclusion. not required because Yeah, conclusion is there. yeah. So summary is not required here. Acha sir, no issues. Koro do. This is not the format. You have to write after result and discussion, just limitation of your report and then conclusion. Okay. So this is not a part of the format. Okay. Anushka, you have done a good job. Let me check your appendix. Please correct other things and submit the final one. This Sure, is ma'am. okay. Okay, Fine. ma'am. Okay, ma'am. Now, okay. Now the next report is Afreen. Afreen is here. Afreen is not here. Okay. Debanjana, I'm starting with you now. Okay, this is okay. Your table is okay. One second. Acknowledgement is okay. Declaration is okay. Abstract is okay. See, you also have to correct the alpha value. Okay. Debanjana, please note down 0.83. And in the abstract, there is a factor analysis and PCA. Both are there. It should not be. Huh? You will Huh. write down only the PCA. Yeah. Debanjana, are you there? Yes, ma'am. Please respond to us. As I was disconnected due to the load sharing.
Okay. Okay. Yeah, this thing is okay. Objective C. Again, you are also writing using R Studio. No, you don't write this. Okay. Check everyone. Please check the last class video for the objective. Okay, Uh, ma'am. huh. Okay. Then there is literature review. Method is good. This is also fine. Characteristics. Okay. Devanjana, in your report, this data visualization is not there. You have to show this thing in pie chart. Okay. Okay, ma'am. I'll show you other reports in which you will find the pie charts of the Pie respondents. chart you can make by the Excel. That Excel is no also. problem. You just copy paste this table there, and you use click on insert, click on pie chart, and select one by Yes, one ma'am. category, education Okay. and with their values. Okay. Otherwise you will not get good matlab you will get some deduction for this reason, because data visualization is important. Okay. Result table, yeah, this is fine. It's fine. Now I'll show you your mistake. Grand mean is also there. This is the Intercorrelation. correlation matrix. This is intercorrelation. See, Anushka, Anushka, now you look at. in this We, way you have to. we have managed Okay. it. Yeah. Okay. I'll see There was that. one thing is missing in this table. Below you have to write down that P something is there. You check Google Classroom. Below Okay, this ma'am. table, there is something which you have to mention. And here also, please mention 0.83. 0.83 is the alpha value. Now see, now look at your mistake. This is your mistake. This part. This table 6A. Table 6A is your mistake. This you are taking it from R Studio, which is not in the format. This you have to remove. Table 6B Okay, also you ma'am. have to remove. You have Okay. to take only this table and you have to write down here principal component. Okay, fine. This Yes, thing, ma'am. and if you see closely, you will see that 0.86 and everything is here. Also, you are getting the same thing, but but this is not an in format, so you have to take this table only. This is your mistake. That's all. Discussion is there. Implication, limitation, future research, suggestion, conclusion. अभी जैसे देवंजना you are writing a lot about it. Basically the format says after discussion, result and discussion, you have to write down the limitation and some of the points for the future research and then conclusion. Okay. Okay, ma'am. So we don't have to write suggestions. Suggestions, sir, can you please help her out, like the format Definitely. You can give the suggestions. suggestion, but implication is also there. Sir, I'm telling you what all things are not, because this is very lengthy. Discussion is there, sir. Then implication is there, sir. Then limitation is there. Future research is there, and suggestion is there. No, that is okay. That is okay. That is fine. Okay. That is fine. Okay, Devanjana. Okay. References. So your report is also you have done a good job. And just remove that part. And please modify your abstract and your Yes, alpha ma'am. value and the Ma'am, table. can you please repeat about the abstract because I was not in the meeting? Acha, sir, this is a abstract. Sir, you were telling her something like PCA only. You have Hello, written, sir. Huh. just you follow. You go to the first line. There you can find out. You have written the factor analysis and principal component analysis. Okay, in the Yes, sir. abstract. That should not be only the principal component analysis. Okay, sir. Okay. And in case of the result section, you can use the PCA only, not the factor analysis. Okay, sir. Yes. Yes, sir. That I yes, sir.
that I think. So you have to change the head title also, huh? Devanjana, okay, fine. And you can also submit the final report. Now Jayata is there. Jayata, okay. Abstract. See, Jayata, objectives again. Please, you are writing this, you're making the same mistake. These are not your objectives. Only one line ka objective we have given. So please check the last class video for the objective. Jayata, are you there? Please unmute yourself. Hello, Jayata. Okay, I'll change it. हाँ, Yes, I'll please do. Okay, change. I'll हाँ, change. हाँ, please change, okay? Literature review is okay. See, अभी जया references, हाँ, ये this is a common mistake. I find this in everybody's paper. Not everybody's, like some of them are doing this. So after literature review, you will not mention references for the literature review. Okay, Jayata? Okay. You have to mention this towards the end of the report, not here. So remove this thing. Remove means just copy paste and put it in the last. Okay, this thing should All not right. be here. This thing should not be here. Method is okay. Okay, fine. This thing descriptive. See, you are doing the same thing again. Tables you are not. This is not required. Describe safety. This thing is not required. You have to take the tables. Do you know where are the tables? Yes, What tables you have to take? Do you know? I have already given those tables, na? No, you have not given. See, you are writing this code. You have to take three. Well, there are total three tables. You have to add those three tables only in your report. No, total 4 tables. The intercorrelation, No, principal first component. table. No. I have First given those table. tables in result. In result. First table is the respondent characteristics. Yes. Second one, descriptive statistics. Third one, intercorrelation matrix. Fourth one is principal component analysis. Yes, I have given those tables in results. And result, then you please remove this from here, okay? This thing Okay. you please remove this thing. They describe safety data sum scale. All right. Okay. Result, okay, this is correct. This This will table. be in the result section. It is in the result section only. Descriptive statistics. This हाँ, includes the descriptive statistics. yeah. You have to write down the title, okay? You have you are writing item statistics. Principal component analysis. And before that, you have No. to show the intercorrelation matrix. And Jeta, principal component analysis का ये table नहीं है. This is not the correct table. Okay. एक गूगल क्लासरूम में फैक्टर एनालिसिस करके एक टेबल है, उसका टाइटल आप वहां से मत पिक करो. टाइटल इज प्रिंसिपल कंपोनेंट. ओके, वो टेबल आपको यहाँ पे पुट करना है. ये वही तो ये दिया है. ये दिया है, तो ये रिमूव इट. ओके, दिस थिंग प्लीज रिमूव इट. All right. ये आर स्टूडियो से है. आर स्टूडियो फॉर्मेट में नहीं देता है, ये फॉर्मेट में. ओके, रिमूव दैट थिंग. सैंपल कोरिलेशन मैट्रिक्स, नो, you please remove it. This is your intercorrelation matrix, so remove sample correlation matrix. Okay, this is your main tip. Okay, you also forgot to mention that p wala thing. Please check the table again. Below that you will find that p wala thing. You have to write down here, okay, below the table. Okay.
Interpretation is good discussion. Limitation. Previous researches, no, there's not previous. You have to write down the references, and in references you will not mention this thing, result and everything. Actually, You it have to will be in mention. the literature review now, previous Huh, researches. yeah, but in That will not be in in the this way. literature review section. And not in this way. Literature review already she has done, sir. This thing is not required. Previous research. But whether it is there in the literature review, possibly she misplaced. Let me just check, sir. See, she has mentioned everything in the literature review. Then Okay. why she You has don't, written again? previous research is not required, Jayata. That is okay when you are doing something for the practical work or something like that. Uh, so you please remove that thing. No, possibly, I do not know what is written. Maybe she wanted to relate the results with the previous research. Research gap, I think she wants to mention. If it I, is, then that is okay. Okay, otherwise this is not required. If you find that is your result is related with the previous research, then you can relate it in the discussion section. but not Yes, in this like way. that. I was doing that. So okay. So not in That's this why I way, was. Jayata. Okay, okay. ये कि ऐसे write कर दिया और then result लिख दिया, okay? Not in this way. So now references, okay? So you appendix is okay. Why are you adding this thing in your appendix? Graphical representation. Uh, No, this is not. This should not You, be in you, the you have to use this thing in the result section. characteristics. Sorry. This is in the method section हाँ, because this is the description of the respondents. That yeah. will be in the sample characteristics. okay. Respondent characteristics in the method section. There you can add this thing. And there you will interpret the data. This is good. Whatever you have done, that is good. That So is nice. only little bit of modification is required. Okay, then it will be in the format. Okay. In appendix only this much is required. Yeah, R studio ka coding tak. Okay. All those things should be in method section. Like sir said, where you are Oh, writing about the characteristics of respondents or something about the respondents, you have to put this there. Okay. Then all it. right. Huh. Thank you. Yeah, you will. Now next is Jinya. Okay, Jinya is here. Yeah. Yes, ma'am. Okay, Jinya. This thing is okay. Okay, Zinia, you just have to correct the font size. See, Abhi, here your font size is something different. Here is different. Okay. Ma'am, Okay, actually the size Ginia, is same. no, Farah, there is wrong. Page number, you have written page number 19, page number 20, page number 22. That is not required. The only thing that is the page number is okay. You can write down 19, 20, 22, Ah, 24. Oh, okay, sir. Okay, sir. no. Okay. So this is not, this you please correct in everyone. Okay. 4, because you have already mentioned this is page number. Okay. So just have to write 4, 5, 6. Only in numeric value you have to write. Okay. Now this thing, abstract. See, you also please correct the alpha value. It is 0.83. Okay, ma'am. PCA is there. PCA variance, okay, yeah. Introduction.
Using RStudio, please remove. Okay. Everyone, please check the last class video for this. Okay, ma'am. Reviews repetitive method. Acha. Here, after characteristics of respondent, you have to put your pie chart here. Okay, Genia. All right. All right. Data description is. Data description. 1 minute, Genia. You are writing codes 1, 3. No, this is not required because already in the characteristics of respondent you have mentioned everything with the percentage. What is data description? So data is basically they have to write down that they have collected this thing. Actually, data description यही है characteristics of respondent only. Okay, ma'am. So I don't need to Why mention she data has description written? separately. हाँ ये codes के साथ this is not required. Okay, this All thing right, is ma'am. हाँ Okay, okay. ये पूरा required नहीं. हाँ यहाँ से it is okay. Description of the instrument 113 items. Okay, yeah. Statistical tool is fine. Result. See you. Abhi, what are you doing? No, you please modify the table. You have to put the table in one Ma'am, I go. have given like the same table only, but I have just given it domain wise. हाँ It's तो the दिक्कत हाँ table हाँ only. हाँ तो Jinia, the problem is that you are writing here discussion. This is not discussion. You are right. You are describing this table, so you don't need any headline for this. Okay. Discussion means in the report, discussion means that you are overall you writing your result in that particular area, in that particular headline. So discussion इधर पे ये format के format नहीं है ये. Okay. So you Ma'am, remove. can you repeat what you said? I just got disconnected. Okay. Okay. So I'm trying to say कि discussion should, this No, headline actually, should. she has done the results and discussion. हाँ but Yes. sir result भी तो He has properly written show रही है. results and discussion, and after that, job satisfaction, and again the discussion. That should not be. No? हाँ और वही हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डिस्कशन डिस्कशन एवरीथिंग का डिस्कशन. ओके, सो हियर इन द रिजल्ट सेक्शन यू राइट रिजल्ट एंड डिस्कशन के बाद जस्ट ये दिस थिंग यू रिमूव, डिस्कशन यू रिमूव, दिस हेडलाइन यू रिमूव. ये इंटरप्रिटेशन इज ओके फाइन. थोड़ा सा प्लीज कीप इट शॉर्ट. ओके, कीप इट शॉर्ट. Okay, ma'am. हाँ ये बहुत लेंदी है. देन सेफ्टी क्लाइमेट में भी रिमूव दिस थिंग, डिस्कशन प्लीज रिमूव दिस हेडलाइन. की कंपोनेंट्स रिस्क टेकिंग. So you have to remove this thing, that headline, and keep it short because you are only describing the table here, domain wise, and you are writing a lot of things in that. Okay. All right, Now, all right. now after this thing is over. Abhi again, okay, discussion, please remove the headline. And now summary. You are giving summary. No, after this you have to again put one table. Grand mean ka you are. This is like the summary of the discussion of like the domains of like the domain 11 main domains. So it's not the summary of the entire paper. But the report in the format na, you will not write this. This should not come. You have to if you are if you're just concluding everything, then don't you write this thing summary. And you have already written a lot of things in your discussion in below your table. So this thing is now you are writing summary. So इतना ये जो part you are telling ना, इतना part का आपका टेबल का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए था, बट आपने उसको पूरा एक चैप्टर जैसा बना दिया. सी ये डिस्कशन मेकिंग है,
डिसीजन मेकिंग है, और इसका आप देखो कितना लेंदी डिस्क्राइब कर रहे हो, जबकि आपके टेबल में क्या है, एन है, मीन है, एस डी है, ये है और ये है, ये ही चीजों से रिलेटेड यू हैव टू राइट। ओके, और आप उस टेबल के मेन चीजों को छोड़ के इसको पूरा आपने इतना लेंदी बना दिया है। ओके, तो आप इसको शॉर्ट कर दो और ये समरी हेडलाइन निकाल दो। यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, समरी ma'am. में क्या लिखा है? हाँ सर। समरी में क्या लिखा? सर समरी में उसने ये द हाई स्कोर्स इन, उसको उसने कंक्लूड करा है सर, सारे डोमेन्स को उसका सब उसने कंक्लूड करके लिखा है ग्रैंड मीन के साथ। अच्छा अच्छा। तो ये दिस इज नॉट द फॉर्मेट जेनिया। ओके, Summary Okay, that will ma'am. be very small, maybe the 50 words or हाँ, और 50 समरी words करके is कोई, sufficient. हाँ Summary. Summary is the रिजल्ट, conclusion. हाँ समरी, Because whenever you will submit the project, then there is a summary findings. Possibly you are thinking about of that line, but that is not required here. Okay, summary findings is not required here. and okay Jenya, so Jenya, you do one thing, I tell you this will you just don't submit a domain wise table, take the whole table and below that you write down your this thing summary, jitna conclusion you have to write, ये this is your summary All na, right, ma'am. for I your, understood. I हाँ for the understood. paper. Okay, so please remove this headline also, summary. Now Jana, one sec. You go to the bar plot. yes, Yeah. This is the 1, 2, 3, 4, 5, no? X-axis. yeah, 4 sir, 4. 1, 2, 3, 4, 5, no? What is written? So 1 2 3 4 only. No, since it's counting from zero, therefore, like 4 points after zero have been taken. Oh, but actually your research includes the 1, 2, 3, 4, 5. Zero is not there. Okay, but No, sir, like you are they're taking zero as the beginning of the x-axis itself. Like this is how the chart came when I put the data in Excel only. oh, acha. Okay. तो आप Okay. तो जैनिया आप ना ये वही टेबल, एक टेबल लो जो टेबल दिया है, उस टेबल को आप रखो और उसके नीचे आप उसका विजुअलाइजेशन, ये ग्रैंड मीन वाला, सॉरी, ये ग्रैंड मीन वाला विजुअलाइजेशन रखो, और उस टेबल के नीचे आप थोड़ा कंक्लूड कर दो सारे डोमेन्स को एक साथ, नॉट सेपरेटली। Okay, ओके, ma'am. हाँ, Understood. यस, अंडरस्टूड ना? ओके, जैसे सबने किया है, मैंने अभी सबकी रिपोर्ट सिखाई थी ना, जैसे सबने किया वैसा यू हैव टू डू नाउ। इंटरकोरिलेशन मैट्रिक्स, हाँ आपको भी इंटरकोरिलेशन मैट्रिक्स फिट टू द पेज करना पड़ेगा। ओके, ये थोड़ा फिट टू द, और इसके नीचे एक और पी वैल्यू करके टेबल के नीचे, वो यू हैव टू मेंशन। वेरी गुड, you have given this pie chart for this. This pie chart indicates what? Jania, tell us This is what the is it indicates. distribution of the means according to percentage for the variables that are related, like the 11 variables that we considered. But that is in pie chart is not applicable, na? Because you are showing only the distribution of the mean. Mean distribution for that is in pie chart is not applicable. Okay, For sir, the I'll mean, you remove it. can show the bar plot. Or you can share the best is the box whisker plot for the all the 11 variables. That is the best one. But you have not done anything. No one has shown the box whisker plot. Okay. But this should not be, na?
Jenia, do one thing. If you want to show data visualization, if you want to show, then what sir is telling you, you follow that suggestion. And if you do not want to show, you are getting confused because tomorrow is the last date, then don't show it. Don't show those things which are not required in the report or which are not appropriate. Okay. Okay, fine, don't do that. And this thing should below the table. This P and everything should below this table. Okay, just below the table you have to mention. Then there is a principal component analysis. Okay, fine. This is okay. Interpretation. What अच्छा is this? यहाँ पे Oh, here, this is box-square plot. yeah, here she has mentioned. Wow, beautiful. Only Genia has done. But Genia ने only this thing अच्छा job satisfaction psychological risk domain fine. This three, very good. Very good, Genia. So, Genia, you remove that pie chart from there, huh? Okay. Further research, suggestion, and Okay, ma'am. limitation. Acha, Genia, after this, now, this thing, result and discussion, you have to write further research, suggestion, and limitation. Okay. Suggestion, limitation, conclusion. This is fine. Okay, fine. References, okay. Appendix, okay. This thing is okay. Fine, Genia, okay. So modify other things, which we told you. Okay, ma'am. Got it now? And submit the final report because your report is almost ready. You just have to modify some of the points. Now, there is Madhuparna. Madhuparna is here? Okay, fine. Yes, ma'am. Yeah. See, अभी ये R Studio not required. Okay, using R Studio not required. This is not the title, Madhuparna. Can anybody tell us the title? Hello, Anushka. Can you tell us the title of the report? Yes, ma'am, just give me a second. What is the title? Okay, ma'am. So the title of the report that I have put is 1 second, ma'am. Where's my hand? It's study of principal component analysis of safety consciousness of industrial workers. Very good. You please give this a title here in the chat box or Okay, in ma'am. Madhupanna. You copy it from there and please modify your title. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Madhupanna, you okay, fine. Yeah. Acknowledgement declaration abstract. Introduction. Madhupanna, again, you also have to modify the objective. Okay. And this is very wrong. When you write in your research paper, you should not use caps lock for all the words. This shows this makes a negative impression. Okay. Madhupanna. Okay, ma'am. Only first letter should be capital. O will be capital and T will be capital. Research objectives of the research नहीं होता format के accordingly only objective. Okay. You will mention only objective. Okay, ma'am. Objective of the research is not required. Okay. And please modify your objective also. You can check the last class video for this. Literature reviews, okay. Method, okay. Data source. Data. BC. ये this thing. Tata Power Safety Projects. Caps look में मत डालो. Tata is okay. Tata should be in capital because Tata is Tata mentioned like this only, but power और safety project ये सब आप एक ही ये caps look ऐसा मत बनाओ. पूरा capital मत use करो. Okay, capital letters में don't write. Data structure. Characteristics of the respondent missing.
Madhupanna, why? Do you need any help in that? Ma'am, no, ma'am, I forgot to do that. I thought I had given. I Okay, will so modify it. don't do these things in this way. Okay, because if you will not submit anything in the format, people will not give you marks. Okay, they will just give you it's a, I don't know how many marks, but बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे अगर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, चाहे आपने कितना भी अच्छे से पेपर लिखा हो, लेकिन अगर फॉर्मेट का एक भी पार्ट इज मिसिंग, पीपल विल नॉट गिव यू गुड मार्क्स. सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्वेंट्स होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स होगा. सो प्लीज वो आपको व्हाट्सएप पे वी हैव गिवन वन टेबल, follow that table, or you can take help of your classmates for this thing. Okay, and pie chart you please add. Okay, description of the instrument is fine. Statistical, item total correlation, okay, fine. What is this, Madhupanna? Yes, ma'am. ये सब पाई चार्ट इतने से ऑर्गेनाइज नहीं है. Factor analysis table given in appendix 3, appendix 4. No, it should not be like this. आप लोग appendix में प्लीज अपना रिजल्ट मत दो, आपको वो टेबल्स इधर मेंशन करने हैं अंडर द हेडलाइन. ओके, आफ्टर दिस लिटरेचर रिव्यू you have to write down the method. Where is your method? Statistical, हाँ method, ये मेथड में आ गया. ओके, उसके बाद आएगा रिजल्ट एंड डिस्कशन. रिजल्ट एंड डिस्कशन में यू हैव टू मेंशन दोज टेबल्स and with the data visualization if you want to. With data visualization is important, so data with the data visualization. तो अभी आपने यहाँ पे लिख दिया है कि अपेंडिक्स 4, नहीं ऐसे नहीं होता. अपेंडिक्स में ओनली क्वेश्चनियर होगा और आपकी आर स्क्रिप्ट होगी, not these things. Okay, data and result table, no, this please modify this thing. Okay, और मधुबना कोई डाउट है, इफ यू आर नॉट गेटिंग द फीडबैक प्रॉपरली यू कैन आस्क अस टू रिपीट. ओके मधुबना, आर यू लिस्निंग? Okay, ma'am. Yes, yes, हाँ, ma'am. yeah. Now you are writing conclusion. You have not mentioned result and discussion. Just coming to the conclusion directly, no. This table should be under the result and discussion section. Okay. Now I have shown you many reports. Please follow those reports, okay? And modify your result and discussion section. This thing also should be. And references are missing. References are not there. Before appendix, you have to mention reference. So, you have to mention references, okay? These things please modify and submit, and you can take help of your classmate for the format. And you can ask us also. But please submit everything in the format. Okay. Madhupanna, got Okay, it? ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Yes, Any ma'am. doubt? Any doubt? Anything No, that you're ma'am. not? No? You got it? Okay, good. Yes, ma'am. Next is Poshali. Okay, Poshali, are you there? Yeah. Yes, ma'am. Okay. Industrial safety and data analysis project. No, your title is also not correct. अनुष्का ने देखो चैट बॉक्स में टाइटल दिया, प्लीज कॉपी पेस्ट दैट टाइटल and modify your title. Okay. Okay, ma'am. This thing, your table, acha. Oh, no, uh, no, Poshali, this content का table, list of figures और list of tables जो है, you have to make separately. Okay. मैम सेपरेटली तो दिया हुआ है. नहीं, आपने क्या किया है, आपने ये कंटेंट के टेबल में आपने डाला है. कंटेंट का टेबल देखो, कंटेंट के टेबल में सबने एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन ये सब डाला था. यस मैम. आपका जो लिस्ट ऑफ टेबल है, इसके बाद एक ऐसे ही बॉक्स बना के लिस्ट ऑफ टेबल होगा, और आपको उस लिस्ट ऑफ टेबल में
टाइटल्स डालने हैं टेबल के विथ देयर पेज नंबर, और सेम फॉर द लिस्ट ऑफ फिगर्स. ओके. Ma'am, the table is there only. Ma'am, you scroll down. आफ्टर एक्नॉलेजमेंट, नो दिस इज नॉट द फॉर्मेट, Yes. नो. ये लिस्ट ऑफ टेबल्स जो है, और आप कंटेंट में भी लिख रहे हो और आप इसमें भी नहीं. आप कंटेंट से पहले तो लिस्ट ऑफ टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर्स निकाल रिमूव कर दो, Okay, और ma'am. कंटेंट के बाद यू हैव टू पुट दिस लिस्ट ऑफ टेबल का टेबल जस्ट बिलो द कंटेंट का टेबल. ओके. एंड यू Okay. हैव टू राइट डाउन लिस्ट ऑफ टेबल्स. ओके. देन सेम थिंग, लिस्ट ऑफ फिगर्स उसके बाद, एंड देन दिस एक्नॉलेजमेंट एंड एवरीथिंग. Okay, ma'am. Declaration, okay, fine. Yeah, abstract. Necessary formula, okay, fine. Introduction, ये cost, okay, complete. After characteristics of respondents, Poshali, you have to add pie charts. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, pie charts of that characteristics of respondent ones. हाँ That हाँ education, caste, religion, हाँ those. हाँ हाँ, those things. Okay. Okay, ma'am. Okay. Education, caste, religion. Then correlation, results, and discussion. Okay. Method, where is method? Acha, method is here. Okay, fine. Yeah. Result and discussion. अभी सी, ये टेबल को यहाँ पे कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया. यू आर जस्ट एडिंग टेबल. ओके, यू हैव टू डिस्क्राइब दिस टेबल ऑल्सो बिलो. मैम, डिस्कशन में ही वो सारा टेबल का मतलब इंटरप्रिटेशन दिया हाँ हुआ है. हाँ, लेकिन जब आप मैम, रिजल्ट में, डिस्कशन पार्ट सेपरेटली. हाँ, डिस्कशन में यू विल राइट ओवरऑल योर रिपोर्ट का ओवरऑल रिजल्ट. But when you add these tables in the result section, you have to describe these tables also. Little bit description should be there. Okay. ओके मैम. लिटिल बिट जस्ट जो भी तुमको समझ में आ रहा है इस टेबल से. इफ आई आस्क यू कि ओके पोशाली, जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस टेबल इज शोइंग, व्हाट दिस टेबल इज शोइंग, सो हाउ विल यू डिस्क्राइब इट? You will tell na, when we make table, we show some important points, right? Mean, SD, item total, correlation, p value. So in this table you have to describe it like किसका p value ज्यादा है, किसका mean कम है, क्या है, everything. You can just write 2-3 line at least. Okay, below the table. Not ओके more मैम. than not anything lengthy, but at least description should be there. क्योंकि टेबल पे तो सिर्फ आपने नंबर्स मेंशन किए, आप स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हो तो आपको उस नंबर को डिस्क्राइब भी तो करना पड़ेगा ना. व्हाट इज 0.001, 0.66 मींस व्हाट, है ना? दैट शुड बी देयर. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इस टेबल का डिस्क्रिप्शन होगा, फिर टेबल 3 का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा थोड़ा सा, लिटिल बिट. इंटरकोरिलेशन मैट्रिक्स, आई थिंक इन द लास्ट क्लास सर टोल्ड that how to describe the intercorrelation matrix. तो थोड़ा बहुत वहां से pick the points and just add it here. Okay, यहाँ पे below the table. This table is good. इस table के नीचे, no, this table 5 is not required. Remove it. Okay, this is from our studio. ओके मैम. Remove. हाँ, remove this. Now interpretation. हाँ, अभी देखो, ये इसका जो था, इसका यहाँ पे you have to write down principal component, और principal component का interpretation दिया हुआ था. तो after this table you have to write down the interpretation of this table, principal component का. Okay, then discussions for table 1. नहीं, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना for table 1, ये आपको table 1 के नीचे लिखना था. ओके, टेबल 2 के नीचे आपको ऐसे लिखना था. ओके मैम. ओके. हाँ, डिस्कशन में आपको ओवरऑल लिखना है कि मैं अगर आपसे ओवरऑल पूछूं, ये टेबल्स को मैं साइड में रख दूं, मैं आपको ओवरऑल पूछूं, आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या डिस्क्राइब कर रहा है. आप बोल रहे हो 11 डोमेन्स थे. ओके,
I'm just talking like an ordinary person. कि okay, 11 domains you have picked, but industrial का data है. 11 domains में से कौन सा डोमेन था जो आपका रिजल्ट मतलब अच्छा रिजल्ट दिया जिसने, या कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहा है, जैसे सेफ्टी क्लाइमेट वाज वन ऑफ देम. एक कोई पर्सनालिटी का भी था. तो यू हैव टू टेल मी इन दैट वे, इन द डिस्कशन सेक्शन. ओके. पीसीए में कौन से वो 3 फैक्टर्स में से कौन सा वाला फैक्टर का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, किसमें लोडिंग ज्यादा थी, इन दैट वे यू हैव टू add in your discussion section. Okay. Okay, ma'am. ये सब. हाँ, tell Ma'am, me. that means in the discussion section, we have to include all the tables and then we have to write No, no, short. no. Discussion section में you will not include table. Table should be there in the result section only. Your result section is up to the mark. Only description is missing. Table का description is missing, which you have added in discussion. ये सब कुछ फॉर टेबल 1, इसका डिस्क्रिप्शन टेबल 1 के नीचे होना चाहिए. फॉर टेबल 2 उसके नीचे होना चाहिए. डिस्कशन में ओवरऑल आप लिखो. ओके. Okay, ma'am. Got it. ओवरऑल क्या है. हाँ, गॉट इट. ये Yes. हिस्टोग्राम. अब ये देखो, डिस्कशन में कोई ऐसा नहीं चीज आना चाहिए. डेटा विजुअलाइजेशन नहीं आता है डिस्कशन. ये सब कुछ आपको रिजल्ट सेक्शन में दिखाना है. योर डेटा विजुअलाइजेशन, योर टेबल शुड बी इन द रिजल्ट सेक्शन, नॉट इन द डिस्कशन सेक्शन. डिस्कशन सेक्शन पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होता है. ओनली वर्ड्स आर देयर. ओके. ये हो गया. ये सब आप प्लीज मॉडिफाई कर दो. ये सारा आप रिजल्ट सेक्शन में डाल दो. ओके. Okay, ma'am. ये क्या है पुशाली? बार ग्राफ ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कॉम. व्हाट इज COM? मैम, वो जो कंपोनेंट. टेबल था ना हाँ, मैम, हाँ, वो जो हाँ, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का टेबल था, उसी हाँ. में से मैम वो डेटा लेके मैंने वो बार ग्राफ दिया है. अच्छा, तो ये आप प्लीज यहाँ पे आपने एक्सेल यूज किया है ना, तो Yes, आप ma'am. टाइटल प्लीज आप चेंज करो. कॉम करके कुछ नहीं होता. COM इज नथिंग है ना. और ये क्या है 2.5, यहाँ पे आप थोड़ा टाइटल लिखो कि ये क्या है, 0.5 ये सब. ओके. You can Okay. change it. You can, and if you are unable to change it, then don't add it because this is not meaningful. ये कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है. ओके. अननेसेसरी आपको ट्रबल में डालेगा ये. अभी Okay. ये हो गया सजेशन. हाँ, अभी देखो आपने यहाँ पे सजेशंस लिखे. सजेशन के बाद यू हैव टू ऐड कंक्लूजन. प्लीज ऐड कंक्लूजन. ओके. Okay, ma'am. देन रेफरेंसेस. अच्छा, रेफरेंसेस ऐसे नहीं लिखते हैं. आई थिंक मैंने क्लास में किसी को APF फॉर्मेट में, हाँ, देवंजना. डू यू हैव दैट नोट? मैंने APF फॉर्मेट का एग्जांपल दिया था. आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have. I will forward that. You please send it to your WhatsApp group. Poshali, you follow that. हाँ. Okay, ma'am. Okay. हाँ. ओके. सो प्लीज ये ऐसे नहीं होता है. ओके. प्लीज डोंट राइट इन दिस वे. बाकी सब कुछ एकदम गुड है. योर रिपोर्ट इज रेडी. जस्ट यू हैव टू मॉडिफाई अ लिटिल. Okay, Devendra, you please post that, in your WhatsApp group because tomorrow is the last day. Now, next is Sagnik. Sagnik, are you there? No, ma'am, he is Sagnik. not present. Okay, okay. ओके, तो फिर जो है पहले उनका डिस्कस करते हैं. सलनी के पास सलनी आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ, ओके. सॉरी, शालिनी, राइट? शालिनी. Yes, ma'am. हाँ, शालिनी. ओके. Thank you, ma'am. हाँ, शालिनी, योर कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ फिगर्स एंड टेबल ऑफ दैट ये फिगर्स एंड क्या था? टेबल ऑफ, कैन एनीबडी टेल मी? टेबल ऑफ फिगर्स एंड टेबल ऑफ. And list of tables and list of figures, I guess. List of tables and list of figures. So, Shalini, you have to make one more table. Okay, ma'am. I'll add it there. Below Before this the content. declaration, I'll. Okay. Okay. Yes. So then this thing your. अच्छा, you are describing a lot in your abstract. Please आप अपने abstract में सिर्फ PCA related result रखो. Okay.
Okay, but ma'am, the last time, sir, just check सर ने my बोला था, report. हाँ सर ने बोला हाँ, था, सर बट ने बोला आपने था कि वो ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन फाइंडिंग्स एंड मेथड्स देने के लिए. So ओके, तो हाँ yeah. आपने फाइंडिंग्स में आई थिंक 1 by 1 का फाइंडिंग दे दिया है, No, ओवरऑल no, फाइंडिंग. I have given the overall like the finding, the interpretation. It's ओके, in the last paragraph. Yes. हाँ, some scores for each individual and group. The play traits such as This okay, work investigates now. वहाँ पे. okay, okay, fine, okay, okay. No, इसमें अल्फा वैल्यू मिसिंग है, हाँ, वो ऐड Yes, कर देना. वो हाँ हाँ हाँ, हाँ. क्योंकि वो सबने ऐड करा है, तो आप अपने ठीक अल्फा है, वैल्यू खुद ऐड कर दो. ठीक है. 0.83 इज अल्फा वैल्यू. ओके, हम्म. ये हो गया. और एक मिनट, मैंने आपका टाइटल, हाँ इंडस्ट्रियल, ये टाइटल भी प्लीज मॉडिफाई. हाँ शालिनी, टाइटल Okay, ma'am. अभी चैट से अभी सब भेज लोग दिया ले मैंने. लो. हाँ. हाँ, कॉपी पेस्ट कर लो. ये हो गया. देन मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ गुड. सो कोई है यहाँ पे कि जिसका निकला था कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस वे? अनुष्का, आर यू देयर? अनुष्का लेफ्ट. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू describe your, I mean, you have to show your characteristics of respondents. Okay, very good. This is good. Then interpretation. अच्छा, दिस थिंग, ये इंटरप्रिटेशन करके ऐसा हेडलाइन मत डालना. ओके शालिनी, ये Okay, तो फॉर्मेट के क्या अंदर नहीं. हाँ, तो क्या क्या हेडिंग है इसका? इसको कोई हेडिंग नहीं देना. ये जैसे दिस डाइवर, ये यहाँ पे डायरेक्ट द डेटा शेड लाइट्स ऑन अ नंबर ऑफ दिस थिंग, बस. Okay. ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पोंडेंट आपने ऑलरेडी हेडलाइन दी है ना, ये हाँ उसी का हाँ डिस्क्रिप्शन है. ओके, हाँ, ये, वो तो पता है, तो सिर्फ हाँ हेडिंग रिमूव कर दूंगी. हाँ, तो इसको हेडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये यहाँ पे वही काम कर रहे हो, हम्म. कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता रहे हो. ओके, हम्म. और क्योंकि आपने इसको इसमें ऑलरेडी दिखा दिया है, सो हाँ, बट इवन इसमें दैट. वो हाँ सर ने बोला कि लास्ट क्लास में हाँ कि वो हाँ, इसको हाईएस्ट एंड करके, राइट. हाईएस्ट टू तो ये, लोएस्ट. हाँ, ओनली दिस इंटरप्रिटेशन यू प्लीज रिमूव दिस हेडलाइन. ओके, description of the instrument is okay. Just and range 0. Job satisfaction 0.5. Sir, are you there? Yeah, I am here, but I do not know what is happening. Sir, Below ये is something is coming. something is coming. Sir, what? Yeah, yeah. हाँ सर, डिस्क्रिप्शन सर आप एक बार Whatever you please. are telling, na, it is हाँ coming. हाँ, so sir, in this description she is writing the range. What happened? Sir, you, in the description of the instrument she is writing n equal to 7 and then range this thing 0.43, That is the range is indicates the item total correlation coefficient. Again, Oh, acha. This is the item yes, total correlation coefficient range. coefficient range. हाँ, Yes, This is so I've okay. mentioned this is in okay, the right sir? last हाँ, line. okay. The instrument is attached in the appendix. हाँ, She can use the median, but हाँ, range is okay. okay, range is fine ना sir. Median Description, is better. हाँ, median is better, but sir अभी last moment पे I don't think Okay. Shalini, okay, fine. This is also okay. Inferential, then results and interpretation नहीं होता है Shalini. Result Results and and discussion. discussion. हाँ, okay. Okay, Please modify this thing. okay, And then after this table, interpretation. No, interpretation. Please remove this thing. Just यहाँ okay. पे ये table का ऐसे description होगा. Okay. So, ma'am, after this, I have written discussion and conclusion for each table. I No, had a no, no. conversation. This is wrong. This is not the format. You remove this thing, Yes. discussion and conclusion. This Okay, I'm should removing be, it. हाँ, Okay. in towards the end. So remove this thing, okay? फिर इसके Okay, बाद ये second table, हाँ, for each table, there is one interpretation, discussion, and conclusion. no, So, no, that is not the format. जब ये table आपने put करा ना, you are adding this table. After this table, remove this headline. okay. Just start explaining the table. This Okay, table, I'll table just 1 write point, down. this, हाँ, I tell you how to explain it.
This is your table 1. Okay. Now you write this here below the table, that this table 1 describe, mention the title, indicate this thing. Everything you included. Okay. Interpretation should not be there. Okay, so the Interpretation, first line I'll change. Okay. you remove this interpretation. You remove discussion and conclusion also. Okay, ma'am. हाँ, okay. ये फिर सेम नेक्स्ट टेबल में भी नो इंटरप्रिटेशन, डायरेक्ट टेबल 2.2 नाउ इंडिकेट दिस थिंग, ऐसे करके यू हैव टू राइट. ओके. Okay, ma'am. देन हाँ, इसमें भी ये डिस्कशन कंक्लूजन ऐसे नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन नहीं होगा. ओके. हेडलाइंस ये सब नहीं होंगी, रिमूव इट. देन थर्ड टेबल, हाँ, ये इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, जस्ट डायरेक्ट टेबल 3 Directly इंडिकेट. table 3 हाँ, indicates. हाँ, इंडिकेट दिस थिंग. और ये लिखना शुरू कर दो. अब डिस्कशन एंड कंक्लूजन होगा. वो मैम ये वो है वो लास्ट में है डिस्कशन और हाँ, हाँ, कंक्लूजन. हाँ. हाँ. तो ये टेबल वाइज टेबल जो आपने डिस्कशन, हाँ. कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन, ये सब रिमूव कर दो. ओके. नाउ डिस्कशन, नाउ कंक्लूजन. हाँ, सजेशंस. वेरी गुड. अच्छा. हाँ, शालिनी, Limitations. कंक्लूजन से पहले यू हैव टू राइट सजेशंस, आफ्टर Oh, okay. सजेशन कंक्लूजन. ओके. Okay. I'll just edit. मॉडिफाई. हाँ, मॉडिफाई. रेफरेंसेस ओके, अपेंडिक्स ओके. हाँ, this thing is okay. Okay, modify your report and So submit. ma'am, I'll just change the headings. हाँ, you have to change the heading. You have to change the title first. Title, You and I हाँ, have to remove discussion and conclusion. हाँ. I tell you one by one. Okay, so that you please note down. Okay. Change the title first. Title is in the Zoom chat box. Please take it from there. Then you have to add list of table, list of figures just below the content table. Then you have to मैम लिस्ट ऑफ फिगर्स मतलब कौन सा वाला टेबल? लिस्ट ऑफ टेबल्स मींस आपने जो टेबल लिए ना, 4 टेबल्स, सर ने बोला ना Yes. आपने 4 हाँ टेबल, हाँ तो आपने वो 4 टेबल्स आपको वहां पे लिखने हैं लिस्ट ऑफ टेबल्स में टाइटल के साथ. हाँ हाँ. उस टेबल का कोई टाइटल होगा ना वो, और पेज नंबर. ओके. Okay. लिस्ट ऑफ फिगर्स में आपके आ जाएंगे पाई चार्ट्स. Characteristics of हाँ, respondents. पाई चार्ट्स आ जाएंगे, वो पाई चार्ट्स आप मेंशन कर दो. ओके. वो हो गया तो आपका. मैम डोमेन वाइज मेंशन करूँ क्या एक ही लाइन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पोंडेंट्स वाला? आपने डोमेन वाइज, आपने तो एक ही टेबल दिया है ना, मतलब पाई चार्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. पाई चार्ट आप, हाँ, पाई चार्ट आप डोमेन, क्योंकि आपने बहुत सारे पाई चार्ट ऐड किए रहे हैं ना, Yes, तो for लिस्ट each ऑफ domain. फिगर्स. हाँ, तो आपको पाई चार्ट, ये एजुकेशन पाई चार्ट, ये ऐसे करके हम्म. इन दैट. ओके. देन ये ठीक है, ये सब ठीक था. आफ्टर दिस, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग. हाँ, फिर आपको वही, हाँ, ये इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ से रिमूव करना है इन द हाँ. मेथड सेक्शन, फर्स्ट ईयर इंटरप्रिटेशन. ओके. बाकी हाँ, यहाँ से भी बाकी सब आपको रिजल्ट एंड, हाँ, रिजल्ट एंड डिस्कशन का हेडलाइन चेंज करना है, रिजल्ट एंड नॉट इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट एंड डिस्कशन. और इसके बिलो द टेबल you have to describe the table. Interpretation please remove, discussion, conclusion, headlines, all those things please remove. Okay. And conclude on last modification है, conclusion के से पहले you have to write suggestion, after that conclusion. Okay. Got it? Yes ma'am. Okay. Now next is Sanchari. Sanchari, are you there? Yes, Sanchari. ma'am. Okay. Industrial safety. हाँ, ये please modify your title Sanchari. Title is in the chat box. Please take it from there. Yes, ma'am. हाँ, अच्छा. अभी ये देखो, ये आपका font size प्लीज, अब font size एक ही होना चाहिए. ओके. ये देखो, अक्टूबर 2024 is very, you are using very small size font. Yes, Okay? I purposefully did that. I'll correct it. हाँ, don't do it purposefully. Okay. Okay, okay. Sure. This is, हाँ, then यहाँ पे पेज नंबर नहीं है, तो ये Yeah, पेज yeah. नंबर, हाँ, list of table, list of figures you also have to add if you are adding any figure. I have added it like after हाँ, the हाँ, acknowledgement. तो प्लीज वो आप कर दो. अच्छा, संचारी हाँ. साहा, संचारी साहा के नीचे यू हैव नॉट राइटिंग योर क्वालिफिकेशन, योर एनीथिंग. Okay, I'll do that. हाँ, you please add this thing.
देन लिस्ट, यहाँ पे आपने लिस्ट ऑफ टेबल्स दिया है, तो आप ये कैसा लिस्ट ऑफ I'll टेबल्स? just हाँ no, it नहीं, is like I have added a lot of tables and I have हाँ added them separately. So I have like हाँ given like table one, table two names. हाँ, so see, these many tables are not there, only 4 tables are there. Please, No, हाँ, no, I get it. I just हाँ, I put a okay. name to all the domains. Okay, Domains so का don't table. put it. Only use the table, 4 tables ka title. Don't add these things. Okay. Achha, okay. List of it. हाँ, please modify it. Okay, ma'am. 0.83 is the alpha value. हाँ. Please modify it. Then Hmm. introduction. Introduction. Please see what is this. Conclusion. Why conclusion? No, there is no headline. Okay, हाँ, okay, remove it. Okay. Note down, okay. Sanchari, Yes, whatever I'm yes, saying. yes, ma'am. Introduction Yes, से conclusion. Please remove this headline. ऑब्जेक्टिव, हाँ ये देखो, ये आपने यहाँ पे ये लगा दिया है. व्हाट इज दिस? yes, sir. A bullet. हाँ, bullet. You don't use bullet here. The main objective of the project is, don't use this Okay, this okay. in this way. To just the main objective of the project is to explore in one line. Okay. Data Okay. description. Okay, fine. Educate. नहीं, not in this way. Data description में only few things should be there. ये characteristics, educational background, social demographics, all should be in characteristics of the respondent. So please write here characteristics of the respondent and then add this. And you are adding wrong things. Codes 1, 3, codes 4, 6. These are not in the I'll remove those codes. So, ma'am, WhatsApp. instead of data description, should I just mention characteristics of respondents? No. Data description is one of the head. Okay. In that, like I've shown you many reports ना. Let me tell you. Yes, देखो, मैं yes. आपको दिखाती हूँ एक और report. I'm using Anushka's report right now. Anushka is your monitor. That is why I'm using her report. देखो. अभी आप केयरफुली देखना. ओके. ऑब्जेक्टिव लिखा है उन्होंने. उसके बाद उन्होंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये आया है. देन मेथड. अभी देखो, डेटा सोर्स, ये डेटा सोर्स होगा. Okay, use the correct headline. Data source. The data was provided by this. Please modify your this thing. You can take the screenshot also or the picture. Please Yes, follow yes, this. I am taking. Achha, these things are common in everybody's report. That is why I'm allowing them. I'm not allowing everyone to Yeah, use. yeah. Okay. Okay. This is not Yes, ma'am. anything that is extraordinary you guys are doing. So data source. Please use this. Click the picture and take it. Yes, Then yes, ma'am. Then there is data structure. Okay, Okay. and then characteristics of respondents. Okay, got it. Then characteristics of respondent. And then there should be a pie chart of characteristics of respondent. Do you know Yes, how ma'am. to I make? have actually added the pie charts at the हाँ, like end of the report. I'll हाँ, just copy and paste it हाँ. after. Okay. Have you taken the pictures? अभी जो मैंने दिखाया Yes, था. yes, हाँ. yes, I have. Please, write in that way in your Mhm. this thing after objective. Okay. Then literature review. Literature review should not be in this way. No. Literature review after the introduction. Okay, Sanchari. Literature Okay. review is after the I introduction. thought the whole data description and everything goes in the introduction. Okay, I'll No, just no, correct no. it. After introduction, here you will write down the this thing. Let me Yeah, yeah. let me show you the structure. Okay, because you are Mhm. confusing with the format. See, just follow this one. Here is our introduction, full introduction. After that, there is objective. Second is objective. Third And is the literature third review. is review of literature. Okay. Okay. So please, and then this thing will come. You're in the method Data section. description, methods. Yeah. Methods. Okay. Please modify your headlines and everything. Yes, ma'am. Method में देखो आपने कुछ भी लिख दिया. Okay. This thing should comes under
this thing मेथड से मेथड में आएगा डेटा वो सब सोर्स एंड एवरीथिंग ओके ये So this आपने whole thing doesn't go. हाँ दिस मेथड में आपको डेटा सोर्स जो मैंने अभी दिखाया था ना वो सब Yes, आपको ma'am. But डालना है हाँ like हाँ आप ये जो लिख I रहे mean हो I have हाँ yeah, हाँ ये okay. जो आपने लिखा है ये भी होगा लेकिन अभी जैसे आप इसका पिक्चर दिखा रहे हो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओके It is just तो like क्या an introduction, a हाँ basic concept kind of a thing. हाँ हाँ नहीं ये जैसे आपने जो आपके आपकी रिपोर्ट में इन योर रिपोर्ट हाउ मे व्हाट ऑल स्टैटिस्टिकल terms you are No, using ma'am, this हाँ photos that like the pictures I हाँ have included, these are just like a basic concept thing. This is not related to the results. नहीं नहीं in the method section you are describing your the statistical tools also right statisticals like whatever terms you are using like descriptive statistics you are using okay so you have Yes. to define the descriptive statistics अब definition doesn't mean that you will describe this thing in a way where you are na we are reading the paper this is not paper this is research report okay तो ये Yes. आपने जो यूज किया है इट इज लाइक अ लेक्चर काइंड ऑफ थिंग कि आप किसी को या नोट्स कह लो दिस इज कॉल्ड दिस इज लाइक यू आर प्रेजेंटिंग एज इफ वी आर रीडिंग योर नोट्स वी डोंट वांट व्हाट इज दिस थिंग वी जस्ट वांट कि आपने जो आपके रिजल्ट में वट एवर यू आर यूजिंग लाइक यू आर यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यू आर यूजिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट यू आर यूजिंग इंटरकोरिलेशन मैट्रिक्स वो सब आपको डिफाइन करना है दैट्स ऑल वी वांट not with these many pictures okay Okay. Okay. so please you remove this thing okay just you have to describe what is pie chart what is everything Mm. without the pictures and then our studio software okay yeah, it is not that important but it's okay if we are mentioning okay data analysis and result no abhi this Just thing ye results. aise nahi ho ha only result mention result Okay. ये आपने क्या किया है अच्छा आप पी डोमेन वाइज So this डोमेन is what I was saying that I have like put हाँ different tables and different table names. So okay do I okay still it's have to okay like it's change it? no it's okay this is looking good but the thing is that अभी ये देखो ये टेबल का half part is going here That I'll arrange like modify that I'll yeah adjust. you please fix it huh please fix it Huh. this is okay you can use मतलब separately also you can present if you are describing everything just below this thing so it's okay table otherwise ये एक whole table है Yeah, this is one whole table but I have like put the whole table after this, like as a club. Yeah, this नहीं this is नहीं हाँ this no this is wrong अभी you tell me what it indicates you are it's describing just I no I have like why I put it is that because huh? first thing it did put like domain wise and then the whole items one by one and the whole. Yeah, I'll just remove it. Huh, see so you are showing the same thing but in different ways so in different ways you can tell the person who is taking your viva in your report Okay. you just everything should be in a structured way Mm. okay so Mm. this is not the structure. So either you please present it everything in the whole table or you present it in this way. Okay. Okay. And my suggestion is that if you present everything in this whole table, then it would be good. Because usually APK format mein people are if they are using so many if they have so many domains, they are using one table to describe the descriptive statistics. Okay. Okay, Sanchari. Will Yes, that yes, be a got it. हाँ and you Yeah. can add ये अलग अलग से whatever you are writing separately the domain wise you write down everything in a paragraph below the table okay Okay. Okay. now the next is frequency distribution of safety consciousness अभी ये क्या है domain wise items no Item हाँ numbers. नहीं ये आपको एक टेबल में if you are right if you are presenting then you please make a table of this and you this should be is in the beginning of the result आप बाद Acha. में डोमेन्स दिखा रहे हो या दिस इज रॉन्ग ओके रिजल्ट के बिगनिंग इफ यू वांट टू ऐड अदरवाइज इट इज नॉट वैसे तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट इफ यू आर एडिंग इट देन एड इट इन द टेबल फॉर्म
and put it in the beginning of the result, like here. Okay, Before ma'am. this table, Okay, you please. I'll just. Okay. ये हो गया. Then is I'll just remove these things. this also you please remove. This is not APA format का table. This is also remove. Table 14. This is Yeah. not Yeah. correct. ये this table is required. And This इस is the table का PCA. PCA. This table is required. Okay. Okay. This table 15 please remove. Okay. This thing please remove. I'll have to remove table 15. I don't think table 15 is to be removed. Table 15 No, WFS. that is no table 15. Like the table name is after the table. Okay, so if sample correlation, na, you remove this table. Yeah, Sample I'll correlation. remove that. हाँ, I'll okay. remove that one. This Yes, is okay. yes, ma'am. हाँ, temp एक ये और एक ये this thing table ये जो भी है whatever it is ये you have to remove whole this thing. Okay. ये पूरा Okay. आपको remove करना है ये table जो भी आप कह रहे हो और ये भी ये पूरा. Okay. और ये भी domain wise item. Then intercorrelation matrix, box fixer plot, very good. हाँ वेरी गुड यू हैव ऑल्सो एडेड इट. बट देखो अभी आपने क्या मिस्टेक किया है टेल यू. आपने इंटर कोरिलेशन मैट्रिक्स के नीचे पीसीए का बॉक्स फिक्सर प्लॉट यू आर एडिंग. दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट. ओके. You have to below I have this to add table. that after the PCA table. After PCA. Okay. Okay. Interpretation and decision. No, this should not be your title. Now you have to write down discussion. The I title have is. like provided a discussion. It's just interpretation is like अभी I tell you interpretation this and interpretation, this thing, this is standardized loading. You add this whole thing, this whole thing. ये summary please remove. This headline you please remove. This whole thing you have to add below your PCA table. This table. Okay. Okay. And then the figure. PCA table is going to be the last table. PCA table, PCA table should be the last one. So intercorrelation matrix and the box plot goes. Intercorrelation matrix just after the this thing, your descriptive statistics. Okay. Okay, got it. Then So ma'am, I add the box plot after the PCA table and then the whole interpretation thing goes. no, whole interpretation, then below the table. No. Below the table you add the whole interpretation of that table. Don't use the headline interpretation. Okay, you have to write down this thing in this way. Don't use the headline interpretation. हाँ जैसे मैंने बोला ना do I add the box plot? this table indicates this thing. This table indicates RC1, RC2, RC3. These are the three components. In this way you have to write down everything. ये सारी headline please you don't use unnecessarily. Okay. हाँ ये पूरा 4 paragraph below the table. Summary will also not. मतलब ये headline please remove the headline. Okay. Then फिर उसके बाद you will present it in the picture form in the database. After the interpretation. After the interpretation, but don't use interpretation headline. You will write after this table indicates RC1, RC2, RC3, H2, U2, complexity, and then loadings RC1, RC2, RC3 के बाद RC1 appears this thing, RC2 appears this thing, H2 are these, eigenvalues are this. I think you know how to write down in a paragraph. Yeah, got that. Only you have to remove some of the headline. This is summary. You will remove interpretation. Now, अभी आएगा 4.2 is your discussion. Discussion में आएगा आपका ये सब आपका टेबल के नीचे आना चाहिए. ओके, एवरीथिंग शुड बी इन टेबल. नाउ आपका डिस्कशन क्या है? ये फ्यूचर रिसर्च एंड लिमिटेशन. That was my discussion, the institute, the intercorrelation matrix and everything. I included that in the discussion. That is your table wise interpretation. Okay, this is your table wise discussion. Now you have to write down discussion. In that discussion you have to write overall everything overall.
what So I'll this just club it in a paragraph. You can club it also. Yeah, you can club it. If you are getting so confused, you just club it everything. But don't Alright. repeat those things. कि पता चला आपने discussion में भी table का उठा के लिख दिया. Okay. Don't No, copy paste that description in your discussion. Use different words and describe your report. Okay. I have actually interpreted every table like very briefly, and in discussion, it's way more elaborate. So that Right. goes, right? Now you got my point. Okay. Okay. सो अभी ये फ्यूचर रिसर्च एंड लिमिटेशन ये सब आपका ऐसे इट्स ओके बट बिफोर दैट यू हैव टू राइट डाउन डिस्कशन future research then limitation then suggestion then conclusion. Got it? ये references not right in this way. I think देवंजना ने Yeah, she has shared. So you please add in that way your references. Appendix is okay. Our script is okay. This thing should be Yeah, in I'll the just copy and paste it after like description. and the headline should be characteristics of respondents. Okay. Yes, got it. Not graphical representation. Mhm. Okay, Got it. fine. Now, Okay, ma'am. now you got it. Submit Yes, your ma'am. final Thank you. report tomorrow. Yes, ma'am. All the best. Okay, ma'am. Then Thank you. next, Then next is Shri Datri. Okay, Shri Datri is here. Study on the principal component of safety consciousness 2024. Shri Datri, are you there? Yes, ma'am. Shri Datri, 2024, this thing is not required in the title. Okay, ma'am. You please remove this. And then this thing. Content, list of table, list of figures. See, in your list of table, page number is missing. Please add page number also. Okay, ma'am. And then acknowledgement, okay, declaration, abstract. Okay, in your abstract, alpha value is missing. So please your add Yes, alpha ma'am. value. You can take the help of Anushka. Introduction, then domains, principle, objective. ये using R Studio, please remove. Review of literature is okay. Ma'am, the heading should be in not in caps lock, right, ma'am? Then I have to edit that one also. Objectives. नहीं ये जो headings है, these headings, ये it's Yes, okay. ma'am. These are the main headings of the report. This is okay. But if you are writing anything, जैसे Tata Power project you are mentioning and everything is in the caps lock, then it is not good. Ma'am, Caps in lock. one part I have written in capital the dimensions. Then I have to change that. Okay, ma'am. Okay, let me see what you need to do. Okay, Okay. ma'am. हाँ जैसे अभी यहाँ पे अभी यू आर राइटिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस अभी दिस इज नॉट द मेन हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट फॉर्मेट this is not coming under the format of the report. So this, if you are writing this thing in caps lock, then it shows it makes a bad impression. It shows that the Okay, ma'am. person is very aggressive or showing anger. This is a negative this makes a negative impact. Okay. Objectives, because it shows the format, it is in the format, so objectives is okay, वो capital में होना चाहिए, because we will realize ki whether the person is writing this report in a format or not. Okay. Now review of literature is okay. Then methods, this is this is I think method, this is not methods. Okay, ma'am. I will change it. Format, method. Then data source, data structure, characteristics, good. Good. Then description of the statistical tools, principle, result, and discussion. The item is this descriptive. Very good. एक मिनट, 1 second. Your headline is there. Table करके, table is there. Abhi in this, Sridhar, you are not describing the table. Ma'am, I have described the table at the end, like as a discussion in one paragraph. I have written it. Acha, so you have to describe something about the table below this table also.
something at least. So whatever you are just in this table, there are Ma'am, grand at mean. the beginning, I have written it is describing the mean and SD, like the Hmm. item statements. No, this is in the table. Now, if I ask you, कि अभी this is in the table, but below the table you at least have to define कि you at least have to describe कि किसका mean ज़्यादा है. Grand mean is where the And then grand can mean. I just cut it from the below? Like if you scroll a bit Mm-hmm. little down, then the paragraph I have written about that. Acha, let me see. You can add that paragraph or not. Factor and after this table, you have to add one more table, which is intercorrelation matrix table. Okay, then factor and then this thing. And the table is not factor analysis table. The table is principal component. Yes, Okay. ma'am. Okay. और ये देखो ये ठीक से आया नहीं है तुम्हारा टेबल. See, your table is not properly. You have added. Please properly. Please add properly. Okay, ma'am. I am looking into it. हाँ. In table 3, this table 3 just below, and after each table you have to describe a little bit about the table, what table is Yes, telling. that is what I have written in the main findings. Like Employees I refer. am talking about this paragraph only. Okay, you please below the table you add these things, And then table I will wise. cut it from here and paste that above. Like पेस्ट इट, हाँ पेस्ट, बट टेबल वाइज टेबल, हाँ. जैसे ये दिस इज अबाउट पीसीए, दिस okay. वॉट एवर RC1 RC2 इज अबाउट पीसीए. Then I दिस, will copy it हाँ under the PCA table. हाँ हाँ. एंड द मेन फाइंडिंग करके नहीं होगा. द मेन फाइंडिंग्स आर व्हेन you write these in this way in the discussion section. You will write when you write in this way, table 1 is indicating this thing. In this way you have to write table 1 Okay, is ma'am. I will indicating. remove the sentence, then हाँ, main हाँ. finding. Modify this statement. These are the very standard statements. That is why I'm telling. Table 2 indicates this thing. Table 3 indicates this thing. Okay, in this way. Okay. Now discussion is missing. This is your result and discussion. No? You have mentioned result and discussion. Okay. After this, after this discussion, do you have to make one head? After this discussion, your overall discussion, this here you have to write down discussion, and then suggestion. ये सब you have to add in the result section. Okay, so the 3 data visualization, everything you have to add in the result section, and not don't use this headline data visualization. Okay, figure 11 ऐसे करके. SD grand mean you Ma'am, please. then हाँ. do I need to make separate heading like result के लिए एक paragraph और discussion के लिए एक separate column? हाँ, separate column, that is better because in the result अब ये this figure should be below your descriptive statistics वाला table because इसमें grand mean आ रहा है. Okay, pie chart cross, ये भी grand mean है, ये भी grand mean है. Same thing you are showing in a different ways. Ma'am, then Okay, can I just remove remove the pie chart or? pie chart, you remove. Okay, then This conclusion. pie chart is not applicable. हाँ, you remove it. Okay. Okay, You ma'am. remove this thing, you add this thing below that table, below descriptive wala table. Remove this headline also, data visualization. Okay. Then after suggestion, discussion के बाद, result के बाद discussion, discussion के बाद suggestions, suggestions के बाद conclusion, and limitation should be before the conclusion. Okay, Okay, ma'am. conclusion से पहले you have to add limitation, then conclusion. Future research भी you have to add before limitation. Before conclusion should come एकदम last में. Okay, Ma'am, according to the point. पहले limitation फिर future research फिर conclusion. पहले देखो पहले आपका डिस्कशन रिजल्ट, देन डिस्कशन, देन आपका लिमिटेशन, सजेशन, फ्यूचर रिसर्च, देन कंक्लूजन. ओके, Okay, ma'am. गॉट इट. और कंक्लूजन Yes. एकदम लास्ट का पार्ट है. एंड फिर ये रेफरेंसेस, रेफरेंसेस आर ओके फाइन. सीरियल नंबर, हाँ अपेंडिक्स, वेरी गुड. बाकी हाँ अदर थिंग्स आर ओके. ओके, प्लीज मॉडिफाई एंड सबमिट. मैम ये जो रिजल्ट और डिस्कशन हाँ का पार्ट है, अगर हम एक हाँ, साथ करें तो कोई प्रॉब्लम है? लाइक कोई अगर प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट आपने क्या किया है,
कि आपने रिजल्ट एंड डिस्कशन को एक पार्ट में करा है, लेकिन आपने वो टेबल के नीचे कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करा है। जैसे मैं बताऊं, टेबल, ये देखिए आपका जो Yes, ma'am, टेबल I है। got that. So I हाँ will हाँ change the. I will just हाँ cut the paragraph from below and paste it under the respective tables. Then हाँ will it be okay, ma'am? हाँ, then you just add few lines about the table, and then you in the discussion you write down everything, the whole part of the report. गॉट इट। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक रिजल्ट के हेडलाइन डाल के उसमें यू ऐड एवरीथिंग, द टेबल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन, एंड देन देयर इज अ सेपरेट हेडलाइन फॉर डिस्कशन एंड ऐड योर जो ओवरऑल। description में लिखा वही तो heading है. Like I have written that, like above each table, I have written what the table describes, like the mean, median. No, you are not writing below the table anything. You are just writing this table one and this is this. That's all. But what is Ma'am, that? what do I need to exactly write, ma'am? Can you just give an example? I'll give you the example. So this is your first table, huh? This table one, descriptive statistics. Now below this table, you please write down something about this table, like this table one. This is your table one. Huh? You are writing this table. This table name. Table And one. that is the description of the second table, like for PCA. हाँ हाँ, नहीं, तो ये आपने यहाँ पे हेडलाइन डाला टेबल वन। अभी बिलो दिस टेबल यू राइट डाउन दिस टेबल वन जो है, टेबल वन इंडिकेट्स ग्रैंड मीन, मीन वॉट एवर, एंड ग्रैंड मीन इज हाई ऑफ दिस डोमेन। इन दिस वे यू हैव टू डिस्क्राइब द टेबल। And that is again we are writing in the discussion, like in the You are writing below. in you are writing in the discussion, but you are how will I get to know कि ये table का part है? You are writing as in discussion. You have to write as whole about the report. Table wise table Okay, ma'am. description should be below the table ना, जैसे यहाँ पे Okay, ma'am. है ना, बिकॉज आपने टेबल को तो कुछ डिस्क्राइब नहीं करा। आपने टेबल का डिस्क्रिप्शन डिस्कशन में दे दिया, डिस्कशन में तो आपको ओवरऑल देना है। मैं आपका और देखो आपने इसमें भी आपने ये मीन विथ अ ग्रैंड मीन ऑफ 431, तो ग्रैंड मीन आप कहाँ दिखा रहे हो? आप डिस्क्रिप्टिव की टेबल में दिखा रहे हो ना, राइट? हाँ हाँ. हाँ, तो आप डिस्कशन में लिख रहे हो ग्रैंड मीन। अभी मैं तो आपका ये यहाँ पे ये फॉल्ट हो गया ना आपका। आपको टेबल अच्छा की अच्छा. हाँ, आपको समझ में आप जो चीज हाँ. दिखाते हो, आपको उस चीज के नीचे वो चीज लिखनी होती है, तभी देयर इज अ फॉर्मेट ना। आप उस चीज को एकदम लास्ट में बताओगे तो फिर वो रिपोर्ट नहीं होगी, वो नहीं रिसर्च नहीं रिपोर्ट। मैम, मैं जो हाँ बताना चाहती हूँ कि अगर हाँ मैं हाँ ये शिफ्ट करके टेबल के अंडर कर दिया तो फिर भी एक ओवरऑल करनी होगी. दैट इज माय क्वेश्चन. तो उसके बाद आपको ओवरऑल में ये आपने यहाँ पे ये जो था, ये आप टेबल के हाँ नीचे लिखो ग्रैंड मीन वाला। हाँ, हाँ हाँ हाँ. अब डिस्कशन में आप अपना ओवरऑल रिव्यू लिखो। ओवरऑल रिव्यू क्या है, मैं आपको बोलूँ, ये आपने 3 टेबल्स यूज करे, 3 टेबल्स का ओवरऑल आप मुझे कैसे बताओगे? वो आपको डिस्कशन में लिखना है। दैट इज योर आर्ट, दैट इज योर जॉब। इन अच्छा. इन हाँ, थ्री आपने रिजल्ट में टेबल वाइज टेबल एक चीज को डिस्क्राइब करा। अब मैंने आपको बोला डिस्कशन करके एक फॉर्मेट में डिस्कशन करके एक कॉलम है, वहां उस चीज में आपको ये तीनों टेबल का मेंशन करना है। मतलब ओ ऐसे करके नहीं कि फर्स्ट टेबल इज दिस दिस दिस, ओवरऑल। अच्छा. हाँ हाँ, हाँ, अब समझ में आया. उन तीनों टेबल से बेसिकली आपका जो टाइटल है, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ आइडिया देने में। आपका टाइटल क्या है स्टडी का? व्हाट इज द टाइटल? Study of the principal component analysis प्रिंसिपल of कंपोनेंट। the तो आपके डिस्कशन में क्या मेंशन होना चाहिए? principal ओवरऑल component analysis. प्रिंसिपल Overall कंपोनेंट, principal हाँ। आपका overall principal हाँ, यू component हैव टू analysis. एम्फसाइज ऑन योर प्रिंसिपल कंपोनेंट इन योर डिस्कशन, एंड कंक्लूजन में भी आपका वैसा ही 1-2 लाइन का वो चीज ओ होना चाहिए। तो मतलब हाँ, हमको डिस्कशन में जो पीसीए है उस पे फोकस करनी है. emphasize should be on PCA। और ओवरऑल आपको जैसे आपने 3 टेबल्स दिखाए, तो ग्रैंड हाँ मीन एसडी वगैरह उसका आपको कट एंड शॉर्ट करना है। हर हाँ. एक डोमेन का नहीं, आपको कौन से डोमेन पे लगता है कि एसडी मीन ये सब जो है वो अप्रोप्रिएट है, जो रिपोर्ट में ऐड है। जैसे सेफ्टी क्लाइमेट, आई एम जस्ट अच्छा. गिविंग यू वन एग्जांपल, सेफ्टी क्लाइमेट, राइट? द सेकेंड हाँ. टेबल इज इंटरकोरिलेशन मैट्रिक्स। वो ऑलरेडी सर हैज लाइक सर टोल्ड यू हाउ टू डिस्क्राइब दैट। तो वो सारी चीज का कट इन शॉर्ट, जो भी चीज उस टेबल में एक इम्पॉर्टेंट है,
Are you telling? Are you getting my हाँ point? हाँ 11 domains are there. तो 11 domains को आप डिस्कशन में मत लेकर आओ, उसी डोमेन को आप डिस्कशन में लेके आओ विच इज गिविंग यू अ गुड आउटकम. अच्छा मैम ठीक है हाँ, गेटिंग माय समझ में आ नाउ गया। यू गेटिंग माय पॉइंट है ना. क्योंकि डिस्कशन में हाँ आपको यही देखेंगे, आपके 11 डोमेन्स की स्टडी कोई नहीं करेगा डिस्कशन में. आपका ये रिपोर्ट में रिजल्ट क्या है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, दैट वी वांट टू नो इन योर डिस्कशन, दैट वी वांट टू रीड. ओके. ओके मैम दैट इज वाई डिस्कशन एक सेपरेट हमने बनाया हुआ है. फॉर्मेट में डिस्कशन इज अ सेपरेट थिंग. वरना आप उसको उसमें टेबल्स के नीचे ही आप पूरा वो कर सकते थे. टेबल वाइज डिस्कशन, टेबल वाइज का अलग है और डिस्कशन अलग है. ओके. ठीक है हाँ, और ये सब कुछ आप प्लीज अपने ये पाई चार्ट आप रिमूव कर दो. ये ग्रैंड ठीक है डिस्क्रिप्टिव, मैम। हाँ ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के नीचे होगा. अगर बॉक्स प्लॉट करनी है वो कहाँ अटैच बॉक्स करूँ? प्लॉट डिपेंड्स किसका बॉक्स प्लॉट कर रहे हो. पीसीए का सर ने बॉक्स प्लॉट करने को बोला था, तो पीसीए पीसीए के पीसीए नीचे, हाँ हाँ, तो पीसीए के नीचे ही बॉक्स प्लॉट होना चाहिए. ठीक. ठीक है पीसीए के टेबल के नीचे डिस्क्राइब द टेबल, देन फिगर, और उस ठीक है फिगर मैम। को भी आप लिटिल बिट यू हैव टू डिस्क्राइब. बट अभी टाइम बहुत कम है, तो आप लोग जो आपके समझ में, आप एटलीस्ट फॉर्मेट तो फॉलो कर लो. दैट्स ऑल वी वांट. ठीक है फॉर्मेट फॉलो कर लो, राइटिंग इट्स अप टू यू. ओके ओके, गॉट इट. ओके तो ये आप प्लीज इम्प्रूव कर लो. नाउ यू थैंक गॉट इट यू ना मैम। यस श्रीदत्री. मैम आई हैव गॉट इट। हाँ, your mistake. You just have to modify your report. Nothing else you have to do, and remove some of the things. Okay, fine. और बाकी जो लोग नहीं आए हैं उनका श्रीदत्ती, कैन यू प्लीज बी हियर फॉर फ्यू मिनट्स. मैं यस मैम आपको उनका बता दूं जो लोग नहीं आए हैं. ये देखो, ये इसने भी सगनीक ने 2024 डाला है. प्लीज आस्क हिम टू रिमूव दिस. यहाँ पे पेज नंबर ही हैज टू ऐड. ओके. ठीक है एब्स्ट्रैक्ट में देखो, उसने एब्स्ट्रैक्ट में अल्फा वैल्यू कुछ भी नहीं लिखा है. प्लीज आस्क हिम टू ऐड दिस थिंग. इंट्रोडक्शन इज ओके. I think this is not the final report. This is not the final report. That is why I said tomorrow they have to submit the final report. So when will they get an idea? Sir, that is I am telling. So you now this is your characteristics of respondent is okay. Sagnika characteristics of respondent is okay. Then अभी इसने tables result हो गया. Literature review, where is that? Method and literature review is there. Okay, fine. Method, then result and discussion. Fine. Okay. Sagni को भी Sridhati, please ask him to follow the same thing. उसने कुछ भी नहीं डिस्क्राइब करा है टेबल को. और ये देखो उसका टाइटल नीचे जा रहा है. प्लीज आस्क हिम टू मॉडिफाई दिस थिंग. हाँ, ये देखो दिस ओके टेबल मैम कंटेंट. हाँ, दिस द टेबल नहीं, ये टेबल 4 है ना, तो यहाँ पे लिखना है द टेबल कंटेंट्स. ये टेबल का टाइटल यहाँ डालना है. द टेबल कंटेंट्स नहीं होगा, टेबल का टाइटल होगा. इंटर कोरिलेशन मैट्रिक्स ऑफ दिस थिंग. ओके. डिस्कशन कंक्लूजन. प्रीवियस स्टडीज नहीं, आफ्टर कंक्लूजन देयर शुड बी नो प्रीवियस स्टडीज. प्लीज आस्क हिम टू रिमूव दिस बिकॉज उसको नहीं समझ में आ रहा है व्हाट इज दिस. सो यू प्लीज आस्क हिम टू रिमूव दिस थिंग. ओके मैम रेफरेंस. आई विल आस्क। हाँ, ये देखो उसने लिमिटेशन फ्यूचर रिसर्च. यू प्लीज गाइड हिम. यू प्लीज टेल सगनी. नाउ यू नो द फॉर्मेट यस ना. मैम हाँ, now you know what we is the. also will get an idea from the previous videos like from the previous हाँ, submissions. but the thing is that students are only focusing on their report कि उनकी report में mistake है. They are not watching others report, and not in that video they are not listening to the feedback of other reports. Like if I'm showing Anushka's report, then people are not focusing on that. They just want to know about their report. That is why they are not modifying anything. So that is why I'm telling you, okay, you please ask Sagnik, huh? Yes At ma'am least I will tell ask him, him. you please at least guide him for the in the for the form, like help him in the format. Sure ma'am हाँ, बाकी कुछ writing में you don't need to help him. Just tell him that this is the format, future research, everything you have to add.
बिफोर द कंक्लूजन, नॉट आफ्टर द कंक्लूजन। और ये सब जो रेफरेंसेस वॉट एवर ही इज एडिंग ना, दिस थिंग, जैसे यहाँ प्रीवियस स्टडीज, अभी ये पूरा ही आस्क हिम टू रिमूव। ओके, एंड दिस थिंग लिमिटेशंस, हाँ, ये सब बिफोर कंक्लूजन, जस्ट इतना उसको करना है, फ्यूचर रिसर्च सजेशन एवरीथिंग बिफोर कंक्लूजन। ओके, इसने यहाँ लिखा है, देन व्हाई इट इज देयर आर टू कंक्लूजन आई एम गेटिंग। हाँ, ये देखो यहाँ पर भी कंक्लूजन है, वहां पे भी कंक्लूजन है। प्लीज आस्क हिम टू रिमूव दिस थिंग। ओके, कंक्लूजन शुड नॉट बी हियर, प्रीवियस स्टडीज मैम आल्सो। ये Hello, प्रीवियस Para. सीरीज हाँ, नेसेसरी है? Hello, Para. यस Actually, सर। this is not the final report because so you do not spend lot of the time for here because whenever the final report, then you can tell it. This is Sir, not the final report. but sir, this is even if it is a draft, they are submitting a lot of drafts, but they are not like they do not know what should be there in their final report. Tomorrow they have to submit the final report, so they must know what should be there in the report on the basis of this thing. So that is why I'm just pointing out these things, because otherwise they will submit this thing only tomorrow. That is why I'm focusing on these things. Okay. How many हाँ, left? How हाँ, many are left? no, sir. Only Afreen ka I'm showing her, and Sridhati, can I show you Afreen or Kabir ka, because they have not attended the class, and Salini ka. हाँ, do Shalini you has have? हाँ, she have attended the class, ma'am. हाँ, Shalini attended. Okay, Afreen or Kabir का then I'm showing you. After that, I will not show you anything. आप सिर्फ उनको फॉर्मेट बता दो, बाकी अदर थिंग्स इट्स अप टू देम। ये Ma'am, 2020। Shalini has attended, right? हाँ, शालिनी हैज अटेंडेड, या हाँ, कबीर और Yeah, आफरीन। Kabir and Afrin left. हाँ, Okay, okay, हाँ, ma'am. ये मैं बता देती हूँ। ये इनको प्लीज अब मॉडिफाई करने को बोलो, ये टाइटल 2024 शुड नॉट बी देयर। इसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स होगा। देखो आफरीन सबा ने, हाँ ओके फाइन, एब्स्ट्रैक्ट फाइन, डिस्क्रिप्टिव, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड। देखो आफरीन का ऑब्जेक्टिव एकदम करेक्ट है, टू द पॉइंट। तो आप लोग आफरीन के ऑब्जेक्टिव को यूज कर सकते हो। ओके, लिटरेचर रिव्यू, मेथड्स, डेटा कंटेंट। यहाँ पे उसको प्लीज हेडलाइंस थोड़ा सा वो करने को बोलो, डेटा कंटेंट नहीं होगा, डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। व्हाट इज दिस? अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, डेटा सोर्स इज देयर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द Instead टूल of the के हाइड। description of instrument, separate heading की. हाँ, वो उसको प्लीज बोलो कि ये देखो ये रिपीट हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये 113 आइटम डेटा कंटेंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये सब कुछ डेटा कंटेंट की हेडलाइन डाल के बोलो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डाले और ये सब लिखे, 11 डोमेन्स, 113 आइटम्स, स्ट्रांगली एग्री। ओके, डेटा स्ट्रक्चर इज ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स ओके, statistical analysis fine, correlation, then result. Where is her method section? नहीं, उसने मेथड फिर डाला ही नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पोंडेंट है। हाँ, मेथड्स ओके, हाँ मेथड में ही डाला, देन रिजल्ट, रिजल्ट ओके फाइन, रिजल्ट। उसको भी श्रीदत्ती, उसका भी यही प्रॉब्लम है। ये देखो इंटर ये इसको रिमूव करने को बोलो, सैंपल कोरिलेशन मैट्रिक्स। उसको भी Okay, बोलो कि ma'am. टेबल के नीचे थोड़ा लिटिल बिट डिस्क्राइब करे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ये सब कुछ, ये WFSC लेवल। ओ गॉड, व्हाई शी इज मेंशनिंग दिस थिंग? दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट। प्लीज आस्क हर टू रिमूव दिस थिंग। ओके, ये पूरा पूरा ये WFSC टोटल कोरिलेशन, ये सब कुछ रिमूव करने को बोलो। ओके, प्रिंसिपल कंपोनेंट का ये पूरा टेबल रिमूव करने को बोलो, 31 पेज का, ये पूरा रिमूव होगा, पूरा ये रहेगा। और देखो PCA का उसने टेबल नहीं डाला है,
Okay, please ask her to add PCA ka table. Okay, Now you ma'am. know na what is PCA ka table. You please ask her to हाँ, add the PCA ka table. Discussion, okay, fine. ये कैसा डिस्कशन है? What is this? 1 2 3 4. 1 2 3 4. No. 113. Okay. प्रीवियस स्टडीज नहीं, अभी देखो कंक्लूजन और ये सब, ये रेफरेंसेस एकदम लास्ट में आएंगे। ओके श्रीदत्ती, उसको प्लीज फॉर्मेट का, ये फ्यूचर रिसर्च okay, ma'am. लिमिटेशन। हाँ, और उसके बाद आएगा कंक्लूजन। दैट्स इट। अफरीन को भी फॉर्मेट बता देना, ये सब कुछ उसमें आएगा रिजल्ट सेक्शन में। देन नेक्स्ट है कबीर। कबीर का भी 2024, प्लीज आस्क हिम टू रिमूव, एड लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर, इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव इज फाइन, लिटरेचर रिव्यू, मेथड्स। देखो उसने भी सेम मिस्टेक करा, उसको भी प्लीज इंप्रूव करने को बोलो। कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें होंगी। अनुष्का का मैंने दिखा दिया है, उसको बोलो अनुष्का का कॉपी पे मतलब कॉपी कर ले कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज वो सारा पार्ट रिपोर्ट में सेम है, सबकी रिपोर्ट में सेम है। डेटा विजुअलाइजेशन, ये वो, कोरिलेशन, ओके, फ्रीक्वेंसी, पीसीए, रिजल्ट्स, हाँ फाइन। देखो कबीर ने ऐड करा है, कबीर, हाँ कबीर। अब ये उसका डिस्क्रिप्शन उसने यहाँ पे नहीं दिया, ये इंटरप्रिटेशन का हेडलाइन हटा के उसको बोलो ये सारा इस टेबल के नीचे आना है, और यहाँ पे हेडलाइन पीसीए डालना है। ठीक है, हिस्टोग्राम ये सब रिजल्ट सेक्शन में आएगा। नहीं, ये सब प्रीवियस स्टडीज उसको भी बोलो ये सब नहीं है, रेफरेंसेस वगैरह सब लास्ट में, फ्यूचर रिसर्च। ओके फाइन, और फिर कंक्लूजन। ओके श्रीजत्री, Okay, you ma'am. got it na? हाँ, you only have to tell Freen and Kabir Okay, okay, ma'am. And and Shabini. Shalini का, I think Shalini was Shabini, there. ma'am. Shabini. हाँ हाँ हाँ, Sagnit, हाँ Sagnit का, okay, okay, ठीक है, these ma'am. three, हाँ okay, and then ask everybody to submit their report tomorrow. Okay, ma'am. Thank Okay, you. thank you Sridharji for cooperating with us. Thank you so much. Bye, take care, all the best for your report. Okay, ma'am. Okay, thank you. Okay sir, we can close the session now. Hello sir, are you there? Hello sir. Sir, can you please hear me?